So first, so this is a completely different session, different recording, guys, which we need to go with. Daily will be trying to cover. मेरे को याद देते जाना बस. So freshers, this question we want. What are all data types you know in Java? Now here, what you need to see, always the problem is communication. यहाँ पे आप लोगों का problem एक ही है, communication. Now what to do? What are all data types you know in Java? So whenever I'll speak in home, you will be trying by yourself to speak this. This applies to all questions and answers. So what are all data types you know in Java? तब आपको क्या बताना है कि in Java we have in short, long, और उसका जब शुरुआत करते हो ना थोड़ा सा अच्छे से कीजिए. जैसे कुछ भी इन शॉर्ट बोलिए, उसको शुरुआत से मतलब कम से थोड़ा थोड़ा बड़ा बढ़ा के चले जाइए. बाइट हो गया, शॉर्ट है, इंट है, राइट, लॉन्ग है, ये एक लाइन आपने पकड़ी. फिर आप बताइए फ्लोट बताओ, डबल क्या हो गया, फ्लोट, देन डबल, क्योंकि फ्लोट और डबल एक टाइप के है, राइट. देन यू शुड से कैर, करेक्ट, बुलियन. ये होगी बात. These are the data types available in Java. That's it. Finish the answer. Up to the point answer you need to give, so that up to the point you need to give. फिर वो ज्यादा कमेंट नहीं करता, right? Or otherwise you should have good communication, good command on your English, so that फिर बातों बातों में आप अच्छा कुछ कर सकते. अगर नहीं आती इंग्लिश, आंसर परफेक्ट. That is what it is. Next. Can you give size required for each data type? Yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले लेके आने का इधर. अब इनका साइज में देखिए हम मिस्टेक क्या कर बैठते हैं व्हेन वी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. वो खूब सारा हम पढ़ते हैं, वो 2 to the power 8, 32, उस टाइप का. आपने पता ना कि ऐसा भी होता है कि नहीं, वो एक साइज होता है -128 to +128 फुल रिमेंबर ऑल. यस, उतना याद रखना हमारे लिए तकलीफ हो जाता है. तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि यार मेरे को याद क्या रह सकता है और मेरे को याद क्या नहीं रह सकता है. ये पहचानना भी एक स्किल है. जो आपको याद ही नहीं रह सकता है, उसको फर्जी में जाके अगर आप बहुत सारा उसके बारे में R&D करेंगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा. ठीक है. सो ऑलवेज फर्स्ट थिंग कि मेरे को क्या जम सकता है और मेरे को क्या नहीं जम सकता है. तो अभी समझ लीजिए बाइट्स है ना, तो हमको कैसे याद रखना है. देखो अब बाइट का साइज क्या रहता है, तो आप क्या रखना है, 1 बाइट. तो एक बाइट एक. ठीक है. शॉर्ट के लिए मे भी क्या रहेगा, इट विल बी, बोलिए, 2 बाइट. 2 बाइट. इंट के लिए 4 बाइट, ये 8 बाइट. ऐसी फ्लोट के लिए फिर से 4 बाइट. इन फॉर डबल अगेन 8 बाइट. कैरेक्टर के लिए 2 बाइट. एंड बुलियन के लिए 1 बाइट. ऐसा सिंपल एंड कंसाइज आंसर आपको रखना है. एंड यू नीड टू स्पीक. और अब जब आप ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी जाएगा. ओके. क्या बोला गया है कि बाइट 1, शॉर्ट विल 2, इंट विल 4, लॉन्ग विल बी 8, फ्लोट विल 4, डबल 8. फट फट फट. ज्यादा कम्युनिकेशन की इसमें भी आपको जरूरत. What are the default values of everything? तो याद रखना है, जो इंटीजर स्टाइल के लोग हैं उनकी रहेगी 0, और जो फ्लोट स्टाइल के लोग हैं उनकी रहेगी 0.0. ये तो बुलियन की है फॉल्स, कैरेक्टर की है ब्लैंक. सो हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस, व्हाट इज द डिफॉल्ट. तो आपको बोलना है कि अब देखिए आंसर देने का स्टाइल, व्हाट यू शुड बी सेइंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एवरी प्रिमिटिव, ऐसा भी पूछ सकता. आपको बोलना है कि देयर आर मेनी प्रिमिटिव्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, ये सब के नाम लेते हैं. देन चालू कीजिए कि बाइट हैव 0, इंट हैव 0, लॉन्ग हैव 0, शॉर्ट हैव 0, float have 0.0, double have 0.0, boolean have false and character have blank. Like that. गलती इसमें क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रिंग भी बोल देते हैं. उसने बोला था प्रिमिटिव. स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव. बट अगर पूछता है स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है,
then you should be saying null. A string has default value of null, ऐसा बोलिए, ठीक है? It's very simple. Then is string is a data type? Answer is no, it's not a data type. It's a class. It's a class in Java. Okay, तो फिर अभी कभी-कभी क्या होता है? Okay, फिर वो क्या बोलेगा? ओके बोलेगा, टेल मी समथिंग अबाउट इट. तो यू शुड से इट्स अ क्लास, इट हैज अ मेथड्स. चालू हो जाने का वहां पे. इट हैज लेंथ मेथड, इट हैज सबस्ट्रिंग मेथड, इट हैज इंडेक्स ऑफ मेथड, इट हैज लेंथ मेथड्स यू नीड टू कंटेंट्स मेथड. ये सारी मेथड्स आपको यहाँ पे बोल देते हो तो अच्छी बात है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट यस और नो, इट इज अबाउट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई कीजिए. नो built java.lang पैकेज में. very good. It's an additional statement. It's in java.lang. Very good. ये होता है कम्युनिकेशन करने के लिए नॉलेज चाहिए. So you should be speaking in. यहाँ पे मेथड्स भी बता दो दो चार. It has methods like and it and so like that. It should be. Can you define a class? तो आपको बातें करनी है ना, तो आप मुझे लंबी सी डेफिनेशन. ब्लूप्रिंट बोलते हैं बहुत सारे लोग. करेक्ट है, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. पर आपको ब्लूप्रिंट शब्द का मीनिंग नहीं पता और ब्लूप्रिंट बोले जा रहे हैं, तो वहां पे होती है गड़बड़. ओके, सो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए. यू वांट टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो. ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में आंसर दे दिए तो हो जाता है. दे वांट यू टू स्पीक आल्सो बिकॉज़ यू आर अ फ्रेशर. दैट केस यू शुड बी सेइंग इन एनी डेफिनेशन ब्लूप्रिंट इज अ परफेक्ट, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. या जो भी आप सोचते हो वो भी. पर मेरे हिसाब से ये भी एक सिंपल डेफिनेशन है. इट इज अ एंटिटी is an operation where properties means variables and object means है ना गाइस. थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लग रहा है, बाकी बात तो वही बोली जा रही है कि नहीं, है ना? वही चीज है, बट आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का सोचो. उसके ऊपर इंटरव्यू को ड्राइव करना भी आपका काम होता है. आप अगर कुछ भी शब्द बोले ना तो वो उसके ऊपर why this why that this स्टेटमेंट चालू हो जाते हैं. सो बी केयरफुल ऑन दैट. कैन यू डिफाइन ऑब्जेक्ट? यस, कैन डिफाइन. क्या रहेगा? कैन यू डिफाइन ऑब्जेक्ट? इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ. इस पे ऐसा फुल स्टॉप मत दीजिए. You need to speak more. You need to speak more. It is instance of a class. We create object in Java by using new operator. Someday by using a new operator. Okay, and whenever object is being created, every member of class goes into the memory. Then we can use those members by the reference variable. देखो कितना कम्युनिकेशन किया मैंने कही. Everyone is getting point? Hello? Yes sir. सर वो एनवाय क्या है? बाय. क्लियर? ये समझ में आया ना? कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ओके, अपना इज इंस्टेड ऑफ ए क्लास. अभी जो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स में इशू क्या हो रहा है, यू डोंट स्पीक. इट्स इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. तो बोलेगा यार ठीक है, अब कुछ तो बोलो और. करेक्ट. सो देन यू स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट आई स्पोक राइट नाउ. We create object by using a new operator. All members of a class reaches into the memory. We use new operator. Create object. अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल है ना? ठीक है, सिंपल है, बट आपको पता होना बहुत जरूरी है. क्लियर है?
और आपके तरफ से ये बोलना बहुत जरूरी है। एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग? Everybody know it. Yes. Yes, sir. You need to speak. Yes, sir. Otherwise, it's of no use. I would say. Otherwise, it will be of no use. Please do that. This is about 6. Can you list out some inbuilt classes in Java? चालू हो जाने का. There are many classes. Okay. One of it is string, then system, then runtime, integer. सारे classes है. अभी यहाँ confusion मत हो जाना. वो int था. That is a primitive. It's a class, wrapper class. A wrapper class हो गया. Input, stream, output, integer, writer, string, system, ये सब कुछ. The class. बोलेगा freshers को यहाँ तक भी पूछ सकता है. Tell me any 10 classes. Tell me any 10 classes which are inbuilt. With 10 हुए क्या तो 4, 5, 6, 7, 8 object. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और सिंपल वाला बताओ. स्कैनर. वेरी गुड. तो समझा. बहुत डिफिकल्ट वाले मत कीजिए आप. प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इफ यू स्पीक डिफिकल्ट यू विल आस्क डिफिकल्ट. मतलब क्या? डिफिकल्ट मतलब आपने अब कुछ अलग ही बोल दिया, एकदम डिफरेंट. तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक आल्सो. सो बी केयरफुल. इसके लिए बोलते हैं कि प्रिपरेशन करके ही जाना है. इसका मतलब क्या है प्रिपरेशन करके जाना? स्पीक व्हाट यू नो. अब रन टाइम तुम्हें पता नहीं है, जबरदस्ती बोलोगे कोई मतलब नहीं. छोड़ो. थ्रेड के 2-4 मेथड पता है. Now how to prepare again after giving answer to this? अब घर में क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग की 2-4 मेथड पता करनी चाहिए आपने. सिस्टम की 2-4 मेथड, थ्रेड, इंटीजर, है ना, इन सब की आपने मेथड्स बतानी चाहिए. तो हटा देते कौन सा इंटीजर. और कोई बोलिए क्लास. क्लास स्ट्रिंग बफर, कलेक्शन की क्लासेस. स्ट्रिंग बफर, Exception class. इसमें छोड़ दिया मैंने just because कि I don't want that to be here, क्योंकि फिर तो फिर उस क्वेश्चन का मजा चला जाएगा. राइट. फटाफट कलेक्शन के बहुत सारे. Exception. That's a risky operation. Risky मतलब कुछ नहीं आ रहा है तो फटाफट कलेक्शन की बोल. बट उसके लिए आपको कलेक्शन में आना चाहिए कि नहीं, है ना. If you don't know those classes, then again there is a problem. Clear guys यहाँ तक? yes sir. Then next. Yes, sir. What is difference between global and local variable? Tell me any 3-4 difference. अब ये कब बोलते स्टेटमेंट? जब उसको पता चलता है कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है. इंटरव्यूअर नोज कि ये दिमाग में ही रखता है बातें, अपने मुंह से बाहर नहीं निकल पाता है. तब फिर ऐसे स्टेटमेंट बोलने लगते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस में. टेल मी 3-4. क्योंकि ये क्या करता है? इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल के चुप हो जाता है. ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास बोल के चुप हो जाता है. स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप. नो, चुप. तो ऐसा चलेगा कि इंटरव्यू में गाइस नो बोल के चुप? हेलो, क्या बोला उड़ेगा? नो, इट इज अ क्लास, इट हैज मेथड्स एंड वेरिएबल्स. ऐसा बोल दो ना. क्लियर? बिकॉज़ 2 थिंग्स फ्रेशर्स नीड टू अडॉप्ट. वन, टेक्निकल साउंड प्लस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग हाई-फाई इंग्लिश नहीं. कम्युनिकेशन मतलब एक्सप्रेस योर थॉट्स. टॉक. इफ यू डोंट टॉक दैट्स प्रॉब्लम. ये मैंने बताया. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल? चालू हो जाने का अपना. ग्लोबल वेरिएबल मतलब आउटसाइड ऑफ अ मेथड, है ना. हाँ, ये एक हो गया. उसके बाद static keyword can be applied. Accessible everywhere in class. ये आउटसाइड ऑफ हो गया. एक्सेसिबल across a class, है ना, across a class in all method. Then initialize नहीं करना पड़ता. initialize with default values. ठीक है. Then we can apply static, access specifiers, static like this. Static final. No, final तो दोनों को लगा सकते हैं. हाँ, final.
ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, लोकल के लिए उसके थोड़ा सा अपोजिट देने का इनसाइड मेथड है ना। हो गया। Accessible within a method. within a method within a block. और भी होता है not initial, we have to initialize। Yes, we have to. ये देखो और कैसा है, और एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि कितने वैल्यूएबल पॉइंट्स बता रहा है। ऐसा भी नहीं किसी बकवास किया जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट्स बताया जा रहा है। इट इज अ कीवर्ड, काम का है क्या पॉइंट है, कुछ अगर है टेल मी समथिंग अबाउट चैटिंग, इट इज अ कीवर्ड। डू यू थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? No, sir. No, sir. हाँ, तो ये भी आपको देखना है जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वैसा प्रिपरेशन थोड़ा सा मजबूत कीजिए, यू विल गेट सक्सेस। we have to initialize and variables, we have to initialize variables. Stored on stack. Yeah, local variables what's on stack. Very good, ये ऐसा कैसे skillful लगता है, this is skillful answer। Heap पे. These are the things, so this you need to speak this local variable, global variable, you should be able to tell this answer। global variables are outside, बोलिए बोलिए जितना बोलोगे। अब मुझे बताओ हिंदी को 2 मिनट 3 मिनट का आंसर होगा कि नहीं है, आराम आराम से जब बोलोगे, हड़बड़ी भी नहीं करना, आराम से। there are two types of variables, global variable, local variable। global variable will be defined outside of a method, local variable defined inside of a method, it is accessible across the class, local variable accessible inside a method। then you should say global variable automatically get initialized with the default value, whereas local variable we have to initialize if you want to use it। then local variable loads on stack as they are inside a method, whereas global variable loads outside loads on the heap। Very good point। And we can apply any access specifier to global variable, whereas we cannot do that to local variable as they are always private। So like that 8 हो गया, in 9th can class be a return type of any method? What is the answer? No, sir. Object of that class can be return type of any method. Answer is yes, because we can have a method like this। Okay, सब लोग याद रखेंगे। See, in Java there are methods like this। I'm not explaining here, I'm just giving you answer। Like this is called as return type। In Java we can have a return type as a class also। Here we can have something called maybe student, then here you need to return the object of student, new student like this you। Yes. So yes, so explain like this, don't just say yes हो सकता है ना। So try expressing yourself, you will get good thing। yes we can have बोलना है, yes we can have। सीरियलाइजेशन में बताया था सर आपने ये वाला। हाँ, मतलब किधर भी देखो, अभी कैसा है, सब लोगों को प्रिपरेशन करना है, राइट? तो यू हैव टू स्टडी दिस, ऐसा होता है, you should be knowing कि we can have return type as a class also, and then we can return a object। okay, hello? Yes, sir. what is block in Java? what is its syntax? okay, तो आपको बोलना है what is block in syntax, what is its syntax, when it is getting executed। so see here, you should be saying block is piece of code, it's similar to method, only it doesn't have any name। we write a code under curly braces। speak this in English properly। when you are listening to this video later after this session,
I want you all to copy my statements at least. What I'm talking should be trying to speak same. I'm not forcing you. It is not compulsory. It is not good to say that you should be copying my statements, but sometimes it is mandatory. Correct ना guys? अभी बोलना पड़ेगा ना, इसको ब्लॉक बोलते हैं, but sometimes I think it is mandatory, right? आप मन से बोलो कि अगर नहीं हो रहा है तो you need to copy my statements, correct? Yes, sir. So what is block in Java is a piece of code. It's just a piece of code. It's like a method only. It doesn't have any name. We write code inside a curly braces. Yes, block. We have different blocks, guys. Static block we have, and non-static block we have. Non-static block. I'm not explaining to students now. I'm giving answers. Copy me. So what is the answer? What is block in Java? It's a piece of code which doesn't have any method name. It's like a method only. We write code inside curly braces. We can write anything over there. There are different types of blocks in Java: static block, non-static block, synchronized block. But be careful while speaking. Synchronize, if you don't know, don't talk this. Otherwise, next question he will suddenly fire you. What is synchronized? Okay. If you don't know, don't speak. Say static, non-static. Okay. If you don't know this also, just speak this. Okay. Then these are the types of blocks. Okay. When it is getting executed, whenever we load class in memory, at time static block will get executed and block will get executed and non-static block will get executed. Okay, so this is what the answer should be like this. Okay, so please be aware of it. और मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई गाइस, जब भी आप बोलते हो बिल्कुल केयरफुली पिच करना, इंटरव्यू में सिलेक्शन होना ही चाहिए. जो वर्ड बोलोगे वो अपने को पता ही चाहिए, अदरवाइज बोलेंगे ही नहीं, अदरवाइज यू गेट फेल्ड. आप खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला काम होता है. आप फर्जी में जाके वहां सिंक्रोनाइज बोल देने का और उसका आंसर ही नहीं पता. ठीक है, सो ये खुद के हाथ से खुद का एक पतन करवाने वाला बात हो. Okay, so will you be careful on this, guys? Understanding हुई आपको ट्रिक जो मैंने बताई? सर ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी होते हैं. ट्राई एंड कैच ब्लॉक आल्सो देयर, बट वो एक्सेप्शन के अंडर आते हैं. तो हम जब ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट इज नॉट प्रेफरेबल टू से दैट. क्लियर? ओके सर. है ना? हाँ सर. But what you said at fresher level, you can speak that also if you know. But you know that and you doesn't know this, then it won't look good. So कैसा प्रायोरिटाइज करना है? What is the best quality answer? This is the best quality. उसके बाद आप अगर कुछ नहीं सोच रहा तो बोल दो ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, नो प्रॉब्लम. क्लियर? यस सर. आपको क्या करना है? बेस्ट वाली का क्वालिटी. What is the super class of all the classes in Java? Class name is Object. object. तो इतना बोल के चुप मत हो जाओ. Again, freshers, I'm telling you, they want to check your answers as well as your communication. So speak something. Object is super class of every class. It has. Which is stored in java.lang package. This also. It is stored in java.lang package. Speak this. Then you should say it has methods like string. ये like सुन लीजिए. String. इसको क्यों ऐसा बोल रहा है? It has methods like, क्योंकि total there are 11 methods are there in the object class. Yes. Totally 11. And if we don't remember, then it makes a problem. Better आप इसको lightly बोलिए. Like object class has methods like. अब जितनी याद आती है उतनी बोल देने का. You get the point? Yes. हेलो, ये बोलने का एक ट्रिक होता है. आप अगर पहले बोल दे इट हैज 11 मेथड्स बोल के चुप हो गए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन यू थिंक? बताओ. 11 मेथड्स पूछेंगे सर. टेल मी. Yes. उसमें भी गलती आप करते हो. 1 2 3 4 और चुप हो जाते हो. बोलता है अभी 6 कहाँ गई? आप देख रहे हो ना, वैसे वीडियो में देख रहे हो, मेरे को ऐसे हाथ से ऐसा गिनता है. देन इट मेक्स अ प्रॉब्लम. क्लियर? सो बी केयरफुल व्हाइल गिविंग आंसर.
और कौन सी? Get method. Get Equals. class. Get class. ठीक है, Notify. ज्यादा याद नहीं आई तो बोल देने का, एक्सेट्रा। क्लियर? Yes, sir. पर आप कितना भी बचोगे, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, बट इंटरव्यूअर नो यू आर नॉट आंसरिंग दैट मच, बहुत अच्छे से आंसर अगर नहीं दे रहे हो ना, तो उसको भी पता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। देन ही विल यूज दिस सम ऑफ देम। सम ऑफ देम मतलब वो पता चुका है कि इसको पूरी नहीं पता होगी। क्लियर? सो आप चालू हो जाओ फिर उधर। स्ट्रिंग hash code, then equals Clone. Finalize. Get class. Notify. very good. Sir, gate name grow. Notify all. Wait. नहीं get class लिख दिया ना। Gate name. रिमेम्बर दिस, इसकी भी 2-3 मेथड्स। क्लियर? हेलो, समझ में आया गाइस? वेट 2-3 टाइप के है ना, तो 2 मेथड और बढ़ जाएगी। दैट्स नॉट नीडेड। इज दैट क्लियर? रिमेम्बर दिस 9 मेथड्स। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Sir, इनके रिटर्न टाइप्स और आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी याद करने हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट्स ठीक है, बट इट्स नॉट नीडेड, ओनली 9 मेथड्स यू कैन रिमेम्बर एंड altogether they are. Now if you are answering this and till now you have answered very perfectly, then he start thinking about your selection, but he has some ego. He want you to fail somewhere, still you will get selected. Then he will ask, tell me return type of every method, tell me usage of every method. You are getting point? Hello? Yes, sir. So you try your best to tell whatever you know. Selection is fixed, but it's देखिए, interviewer doesn't mind if you give wrong answers or something. He want to see attitude. वो देखता है कि यार जब इजी पूछा तब तो आंसर दे दिया था ना, टफ क्वेश्चन के लिए तो यार कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस वाला ले आओ तो फंसेगा ही ना कहीं ना कहीं। डजंट मैटर। क्लियर? इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि बड़े के चक्कर में छोटी चीजें मत छोड़ दो आप। ये समझा मेरा स्टेटमेंट? हेलो? Yes, sir. Yes. हाँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, टफ चीज सबको नहीं आएगी। और अगर टफ चीज पूछ के लोगों लिया तो कंपनी में लाख एम्प्लॉय हम नहीं ले पाएंगे। गेटिंग पॉइंट? 2 लाख एम्प्लॉय 3 लाख एम्प्लॉय बन पाएंगे Yes, sir. कभी? इसमें आधे कम दर्जे के होते हैं, जगह से थोड़े से बड़े वाले होते हैं, उससे ऊपर बड़े वाले होते हैं, सैलरी भी सबकी डिफरेंट करती है। इसीलिए सभी लेवल के एम्प्लॉयज के लिए जगह बनी हुई। 15 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस विल बी सीइंग टुडे। Can we give fully qualified name instead of importing that class? Answer is yes. Yes. Now, how to do that? So, let's say you should be speaking in this way. Let's say there are 2 classes A and B, and A is in hi folder, B is in hello folder, com.hi, com.hello. If A want to create object of B, you can write B new B and then import, and then import. But instead of import, you can write com.hello.e. Instead of that, you can write instead of import com.hello.e, because A is calling B. Something here, new com.hello.e. Clear? This is how we use fully qualified class. Fully qualified class name means it's a package that you should be telling. Should say how to give answer then to this question. Yes, we can use fully qualified class names. We can use package names by appending to the class name.
And whenever we create an object, we can write com.hello.b and then reference variable equal to new. What are the access modifiers, access specifiers available in Java? Explain each of them. If this has been asked to me, majority of the people do mistake. They tell private and then they explain the private. Then they tell default, they explain it and then forget what to do. So be systematic, be structured. Okay. In this case, what you should be saying, it should be saying there are 4. Now, why I wrote here 4? Because 4 can be remembered. जब 11, 15, 20 होती है कोई चीज, 15 classes are there in the collection, बस जाओ 15 बोल के, कोई याद नहीं आएगी. ये लॉजिकल सेंस समझ में आया? Don't take number if you don't know. Clear? Yes, sir. Yes, sir. When you are confident enough, अब 4 है तो ये सबको याद रहता है. There are 4 access specifiers. Name of them is private, in default, protected. and public. यहाँ पे बताते समय थोड़ा सा ट्रिक यूज कीजिए, अच्छा वाला बताइए, अच्छा ट्रिक यूज करना है. देखो मैं अच्छा और बुरा का बात बता रहा हूँ, नॉट बेकार बट नॉट गुड आई वुड से. देखिए ये सबसे कम एक्सेस होता है, देन इसका थोड़ा बड़ा है, इससे उसका बड़ा, इसका इससे ये वाला सबसे ज्यादा. सो देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. प्राइवेट मींस इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड. Default means within the package only it will be accessed. Protected means only in the other package, but in subclass. In subclass, this will be getting you. And then in public means it will get access everywhere. Now try to understand what I did. Important points of every access specifier I explained here. ये समझ में आया क्या? Yes, sir. मैं प्राइवेट है तो प्राइवेट को खींचता बैठ गया क्या बहुत देर तक? No, sir. बट अगर मेरे को क्वेश्चन केवल प्राइवेट का पूछा तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिटेल में बताइए. Private you need to explain in detail. Okay, so these are the 15 questions and we'll be doing it regularly so that we'll cover more and more questions, guys. Within that 5-10 days we'll be covering all of them. Is that okay to everyone? Yes, sir. Yes, So sir. this recording I'll be putting on YouTube Yes, also. sir. Okay. ठीक है. तो ये this recording you will not get on the WhatsApp, but you can access that directly through a YouTube let's say channel. There are many videos, interview के मेरे बहुत सारे videos भी है. आपने देखे हैं क्या किसी ने कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that will also improve your knowledge. Yes, sir. Okay. And उसमें कुछ do you think any benefits you got out of it or not? कुछ benefit उससे मिला जो आपने इंटरव्यूज देखे? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा प्रश्न कीजिए. Anyway then guys, thank you. I'm also getting late. Okay. Thank you, sir. चलो, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, sir. Sure, bye. Thank you, sir. कब तक अपलोड हो जाएगा? ठीक है.